Thank you so much, sir, for explaining it with such great details. So, I wanted to know that in today's world, with a major advancement in AI, everybody is aware that it has become a major tool for change and growth, leading to positive as well as negative changes, which makes us intrigued to learn more about it. So, can you provide us with an overview of how AI is currently being integrated into the field of education and mental health? Okay. So first of all, we have to understand what is AI. Normally, हम सब लोग बोलते हैं AI, artificial intelligence. Nowadays, it is a very buzzword. You see every third news in your Google feed or on your YouTube is related with some sort of AI. So it's a very hot topic. But what is AI? So it is comparatively the popularity has been gained very much of the AI in last few years, and especially after this release of this chat GPT. So AI का बहुत ज़्यादा AI जो है लाइमलाइट में आ गया. उससे पहले कुछ लोग जानते थे, और उससे भी पहले अगर अपन 20-30 साल पहले देखें तो AI was more confined with the laboratories in the big universities. वहाँ पर AI के ऊपर रिसर्च होती थी. AI artificial intelligence, what it is. ऐसा समझा जाता था when we talk about an intelligence, intelligence is an organic thing. Organic means what? It is basically related with the life, where there is a life, not any life, but स्पेशली अगर आपके अंदर वो लाइफ है, कॉन्शियसनेस है, तभी उसी के साथ साथ जो है वो इंटेलिजेंस आती थी. Okay. So we can say that trees are alive. We can say there are different animals who are alive. No, it's not. It's about a certain category of an organism that is basically related, especially with the humans. We say certain kind of intelligences are also there in the chimpanzees, in the penguins, and some other animals also. But that is what intelligence बहुत हद तक organism या organic उससे जुड़ी हुई थी जहाँ पर life है. धीरे 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 धीरे, but we have started developing the kind of machines where, you know, they also started thinking on their own, but it does not mean we have transferred the life in the machines as well. So इंटेलिजेंस वाज ऑर्गेनिक, बट धीरे 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 इंटेलिजेंस को हमने ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक थिंग्स में भी लाना शुरू कर दिया. ओके. Intelligence is a different from an information and memory. Although memory plays a very important role in intelligence, but intelligence is far more than this. Okay. मैं आपको इंटेलिजेंस को सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले, क्योंकि when we talk about memory, we say we have a hard drive, we have the mobile, we have earlier the CD, the cassettes. उन जगहों पर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते थे. देयर आर द बुक्स. बुक्स में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, बट इट डज नॉट मीन दे आर इंटेलिजेंट. सो मेमोरी वॉज वन थिंग, और मेमोरी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है, बहुत सारे एनिमल्स में भी मेमोरी होती है. बट इंटेलिजेंस इज मोर दैन दैट, समथिंग मोर. And what it is basically, it is related with the critical thinking, it is related with the comprehension, it is related with your analytical skills, and it is about creating something new. All these things are the different elements of the thinking. So earlier we had an technology to store the memory in the different things, or there were our animals can memorize the things, but it does not call an intelligence. Intelligence was more than that. Okay? लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, अब मशीन जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा सोच सकती है. So AI is this. We have reached to this artificial intelligence. Machine जो है अपने आप में we create the machine. अपने आप ही machine को intelligent नहीं होती है, we create it. हम उसमें कुछ डालते हैं. That's why we basically called it an artificial, means that is not natural. Okay. So now AI is very 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 important in all the sectors, be it an education, be it a mental health, be it a health sector, be it a
law, commerce, and anything. Okay, what is the importance of educate? What is the importance of AI in education? So it is important in many aspects. One is basically that AI जो है, with the technology, it is able to reduce the gap or the inequality. Okay, for example, even when we talk about the machines, when we talk about the kind of, okay, before that, let me ask you this question. Have you ever used the chat GPT? Yes, sir. On daily basis. And on what ways you use it? Means Sir, why you on different things, maybe getting to write it a script for me, maybe, or maybe learning new words, or maybe frame an answer for me, for almost all the purposes now. That is what the impact of AI is today, that we have integrated it in a lot of things today, in all the fields. Hmm. So that is what actually many of the times even normally अगर मैं बहुत informally आपके हम आप आपस में बात करें so I feel that even in our day-to-day life when we talk about the different components of an education many of the things are very much repetitive. It does not require us to do this certain thing. हम बच्चों के homework की बात करते हैं, हम किसी दूसरी चीज़ की बात करते हैं. You know, they are so repetitive. It does not actually create anything. Okay, so actually the AI system provides you a kind of a platform where you focus your energy on more creative things which are beneficial for you and remove your attention from those things which are unnecessary or which any machine can do. Understand? This is basically what I think is. Yes, sir. Like you mentioned कि हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे ऑफ गिविंग होमवर्क्स एंड असाइनमेंट्स एंड डिफरेंट फील्ड्स में भी जैसे हम एआई को इंक्लूड कर रहे हैं, इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट. एंड लाइक यू मेंशनड कि एआई वर्क्स ऑन मेमोरी, and memory and intelligence basically are integrated together. So like memory, it also works on algorithms. So what are the methods and what are the ways, जिस ways में हम AI को personalize कर सकते हैं for students to enhance their learning experience, और उसके कौन से potential benefits हो सकते हैं सर? ये बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है और बहुत बार आपने सुना होगा हम एक वर्ड एक टर्म बार बार यूज़ में लेते हैं कि हम अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना गूगल हमारे बारे में जानता है और बहुत बार आपने ये भी चीज़ देखी होगी मैनी ऑफ द टाइम्स यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड ऑन सम पर्टिकुलर कुछ ऐड जो है अपने गूगल पर या अपने अकाउंट पर अपने यूट्यूब पर या किसी वेबसाइट पर देखकर आपको लगता है ये ऐड कहाँ से आ गया मैं तो इसी के बारे में सोच रहा था व्हाट डज इट मीन बाय दिस इट इज़ बेसिकली व्हाट द पर्सनलाइजेशन मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम एडवर्टीजमेंट दे आर सीइंग द सेम कंटेंट फॉर एग्जांपल on a YouTube but they might get the four different kind of ads will not be the same like the टेलीविज़न में हम सब लोग अब जी टीवी पर या जी सिनेमा पर या आज तक पर 1 लाख लोग अलग अलग जगह पर कुछ देख रहे हैं सो दे ऑल यूज टू सी द सेम काइंड ऑफ एड understand now the thing is you will see the different kind of things for might be for 100 people there are different 100 kind of ads are there even the thing is that even you two people are there they are seeing the ad of the same company the length might be different one person might seeing the 15 seconds ad and the other one is seeing the 3 seconds or 4 seconds ad so this is what the personalization means how AI can help how we can use the AI to get the content more personalized AI का सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जिस पर AI काम करती है दैट इज़ अबाउट पैटर्न एनालिसिस पैटर्न क्या है किसी भी चीज़ का The thing is, whatever we are doing every second,
where we are, what we are talking, with whom we are, everything is being recorded, and that creates a certain pattern about you. I don't know if you have heard or not about this, that few years back, although it was an unsuccessful project, but it was there that they have released one special kind of glasses, this which we call a Google Glass. And what was there that if you are going on a road, for example, and suddenly there was some big billboard is there, और आपने उसको देखा, तो बिकॉज यू आर लुकिंग थ्रू दैट ग्लास, तो वो ग्लास हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करेगा, आप किस किस चीज़ को देख रहे हो, आपकी रेटिना पर कौन सी इमेज बनी। जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो यू नो uh, we have a kind of different kind of nervous systems are there. So when you look at a certain thing, you might get excited about that, so certainly your pupils get dilated, or they get थोड़ी सी dilute हो गई, थोड़ी सी आपकी heart beat बढ़ गई, all the things are being recorded. Understand? This is how basically our autonomic nervous system, how it works, everything. And then आपने किस पिक्चर के किस पर्टिकुलर चीज पर फोकस करा, हाथ पर फोकस करा, आंख पर फोकस करा, किस चीज का जूम आपकी आंखों पे रेटिना पर क्रिएट है, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, दैट्स हाउ दे गेट टू नो मोर अबाउट दिस. बट एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजंस ऑफ प्राइवेसी एंड ऑल दैट थिंग, उन चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया, मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ गया, और गूगल क्लास इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ ड्यू टू द प्राइवेसी रीजन. What I'm trying to say is this, that as we humans, how we behave like actually the machines. We behave in a patterns always. कि अगर मैं अपने डे टू डे डायरी लिखूँ, तो मैं इतनी बजे उठता हूँ, मैं ये खाता हूँ, उसके बाद मैं ये करता हूँ, उसके बाद मैं वो करता हूँ, तो बहुत गहराई में अगर मैं हर चीज़ को बारीकी से लिखूँ, तो 20-21 दिन में मैं अपने बारे में बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ, और मैं अपने बारे में भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में क्या करूँगा. So the same basically AI is do is what, how an AI can personalize and how we can use the AI is that AI is taking the data about each and every activity of us, and since it is the machine, it has a huge memory, unlike the humans. अगर humans हम इतनी memory को अपने आप store करने की कोशिश करें, तो it will take lot of our cognitive cognitive energy. सो और हम उसके बाद थकेंगे भी, लेकिन मशीन के लिए कुछ नहीं है. मशीन कितनी भी सारी इंफॉर्मेशन हमारी ले सकता है, इकट्ठी कर सकता है, हज़ार लोगों की, लाख लोगों की, करोड़ों लोगों की, और बिकॉज दे आर द रोबोट्स, दे आर द मशीन्स, तो उनको थकने का भी सवाल ही नहीं. एंड दैट्स हाउ इट एनालाइजेस द पैटर्न, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट it gives you the personalized content, which is also very beneficial for you. We all know why the YouTube is very successful, YouTube Music is very successful, Amazon is very successful. Because बहुत बार हमें नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, एंड व्हेन दे शो सर्टेन कंटेंट, अरे हाँ यार हमको तो यही चाहिए था. सो इट टेक्स सेव्स अवर लॉट ऑफ एनर्जी. हमारी बहुत सारी एनर्जी से बचती है कि हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, नहीं करना, बहुत चीज़ें हमें ध्यान नहीं रहती, बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं. सो इन दैट वे एक्चुअली द एआई शोज अ लाइट. एआई कुछ नया नहीं कर रहा, पर कुछ नया नहीं रहा है. द थिंग इज कि हमारे सारे डेटा को गैदर करके एक पैटर्न को एनालाइज करके चीज़ों को वो दिया जा रहा है, बिकॉज हमारी जो मेमोरी होती है वो ऑल्सो इट इज़ वेरी पुअर. It's not very efficient. Human memory is not very efficient. It is limited. It takes too much of cognitive space, and then it is also prone to different fabrications also. That is not the thing in it. So that's why I think this very personalization is one of the very big advantage of the artificial intelligence. Because प्रॉब्लम क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ, हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का 10 अलग तरह का पर्सनालिटी टाइप हो सकता है, अलग तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हर बच्चे को सेम तरीके से पढ़ना होता है, सेम एग्ज़ाम को देना पड़ता है, और उसके बेसिस पर ही उसकी पूरी एबिलिटी को निर्धारित किया जाता है. आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है
कि अगर आप मछली को किसी पेड़ पर चढ़ाएंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि मछली पेड़ में चढ़ने में बहुत अच्छी नहीं है, on the basis of that you will judge the fish, it is a very wrong standardization method. The problem with our current education method is it is very much standardized, equal for same, but we are not the same. We all have the different, we all know we all have the different likes and dislikes and interests and all those things. At least AI gives us a chance, और एक जिसे बोलते हैं, AI can personalize that yes you are unique and the content and everything will be in accordance with your uniqueness, and that is what it should be. क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना हमारे समाज में, आपने सुना होगा, मैं राजस्थान में रहता हूँ, पिछले साल एक साल के अंदर में लगभग इट इज़ एन ऑफिशियल न्यूज़ दैट 15 से 20 बच्चे ने कोटा में सुसाइड करा। वाई? व्हाट वाज द नीड? हर बच्चे को नीट में पास होना है, जेईई में पास होना है। वाई? दे माइट हैव द डिफरेंट एबिलिटीज, बट बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन का तरीका है कि हमारे पास केवल एक ही स्केल है किसी की एबिलिटी को नापने का, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है, एंड दैट इज द बिगेस्ट, what we can say, the roadblock for the creativity, and the biggest toll it takes on the psychological health and the mental health of the people. So, like you mentioned, कि AI में data record होता है, which is a very big advantage, and it can help in personalization. But sir, in the same way, data privacy or data is the very crucial concern as of now, and it can be misused. So, हम जब AI को implement करते हैं, हम किस तरीके से उसको misuse करे बिना implement कर सकते हैं, so that हमारी जो mental health issues हैं, या फिर किसी भी बच्चे के, किसी भी स्टूडेंट हु इज़ इन्वॉल्विंग इन अ कोर्स और एनीथिंग, उसमें हम उस चीज़ को बेनिफिशियली यूज़ कर सकते हैं, एंड उसका रोल कैसा होगा कि वो प्राइवेसी को इन्वेड ना करे और डेटा सिक्योरिटी भी उस चीज़ में मेंटेन्ड रहे। देखिए ये भी बहुत मज़ेदार बात है, और ये सबसे आज के टाइम में सबसे बड़ा एक हॉट टॉपिक है ग्लोबल डिप्लोमेसी का भी, कि किस तरीके से जो है हम व्यक्ति की प्राइवेसी को जो है वो की रिस्पेक्ट करें, और किस तरीके से उस प्राइवेसी को मिसयूज़ होने से बचाया जा सके। एंड यू माइट हैव हर्ड, आई थिंक द यूरोपियन यूनियन हैज़ द मोस्ट stringent law related with the data privacy and all that thing, but it is a very debatable thing. Why? Because AI जो है वो पूरा की पूरा बिल्ट होता है, AI का सिस्टम डेटा पर, और अगर आप डेटा को प्राइवेट रखेंगे तो एआई का सिस्टम जो है प्रॉपर्ली बिल्डअप नहीं हो जाएगा। दैट इज बेसिकली द डिबेट बिटवीन द बिग कॉर्पोरेशंस ऑफ like the Microsoft or the Google and all those things, and the different governments, because the data also, the privacy of the people needs also to be restricted. तो ये बहुत ही एक कैच 22 सॉर्ट ऑफ एक बड़ा ही इस तरीके का चीज़ है जिसको सॉल्व करना अभी भी प्रॉपरली है जो है वो पूरा पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें कि प्राइवेसी का मिसयूज़ होने से हम रोक सकें। तो ऑब्वियसली जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लॉज बनाए, और वो लॉज इस तरीके के हों कि एआई को हम इस वे में डेवलप कर सकें कि हम उसको यूटिलाइज भी कर सकें, और उसमें इस तरीके की पेनल्टीज़ भी हों, रेगुलेशंस भी हों कि अगर डेटा को मिसयूज़, अगर प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट किया गया तो हम किस तरीके से स्ट्रिंजेंट एक्शन भी उनकी तरफ ले सकें। तो इसके बारे में बहुत सारी डिबेट जो है वो चल रही है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम और थोड़ा सा पीछे आते हैं और बात करते हैं एथिक्स की, एंड हाउ द प्राइवेसी एंड एथिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली रिलेटेड। तो अगर आप 1980s में, 70s में जाएं, और अगर आप ये लिस्ट निकालें कि टॉप 10 बिग कॉरपोरेशंस ऑफ द वर्ल्ड, so you will see there is a Shell, there is a kind of the
The companies who are in an energy field, the companies who have and who are from an infrastructure field, there are certain companies who are from mining, for example. तो उस ज़माने में ये 10 बड़ी कंपनियां हुआ करती थी। आज अगर आप सर्च करें 2020 2000 2010 के बाद से लेके टॉप 10 बिग कॉरपोरेशंस ऑफ द वर्ल्ड, so you will find 7 to 8 out of 10 big corporations are related with the technological field, related with software, related with cloud computing, related with the different software tools. And all these companies are also working in the field of AI. Now, the debate is being going on that within the next 10 to 20 years, these companies will become more powerful than the governments. In the next 20 years, 15, 20 years, the Google will be more powerful than the US government. Why? Because अब स्थिति ये हो गई है कि गूगल की, आप गूगल को अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं सकते। और अगर गूगल को कोई प्राइवेट चीज़ आपके जो जो भी चीज़ें चाहिए वो आपके सारी जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको उनको लेना भी पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन हैज़ बिकम। अब ये जो एथिक्स वाला जो पॉइंट है, ये सारा देखो, एआई जो भी सिस्टम डेवलप हो रहा है वो डेटा पर डेवलप हो रहा है, साथ में उसमें कोई कोडिंग कर रहा है, कोई कोड डाल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहा है। See, you will know, few days back, a few months back, one Twitter user posted a picture on the Twitter in which she was the lady, और उसने चैट जीपीटी से ये पूछा कि मेरे को इंटरव्यू में अपने अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। उसने अपनी फ़ोटो डाली, सिंपल फ़ोटो खींच के, और उसके बाद मशीन से पूछा कि मैं अगर इंटरव्यू में अच्छा इम्प्रूव करना चाहूँ, तो मेरे को क्या-क्या चेंजेस अपने अपीयरेंस में लाने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ अ जनरल क्वेश्चन। हम भी पूछते हैं भाई, हमें ड्रेसिंग सेंस सही देखना चाहिए, हमारे बाल अच्छे से होने चाहिए। दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी डू। इंटरव्यू में जाते हैं तो फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं, ये सारी चीज़ होती है। चैट जीपीटी ने एक नया पिक्चर क्रिएट करा, और उसने क्या करा, वो जो लड़की थी उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क था और उसको थोड़ा सा लाइट, मतलब उसका जो कॉम्प्लेक्शन था वो एशियन था, चाइनीज एशियन। उसके कॉम्प्लेक्शन को एकदम वाइट कर दिया, समथिंग रिलेटेड विद द यूरोपियन और अमेरिकन। This is what. Then she has pasted this. What it is showing? It is showing that even the AI data, the AI is also biased in that. Why you should be fair. If you AI machine thinks that you should be fair in your color, you should be from an American or European ethnic base if you want to perform good in an interview. What it is? This is you will see the kind of a the biasness and inherent biasness which is there in an AI. Understand? And that is also very much related with a kind of, you say, the different privacy issues, all that, and all that. तो ये जो प्राइवेसी का पूरा की पूरा, ये सारी कहानी ये है कि एक्चुअली में एआई जितनी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट्स उसको शायद समझ ही नहीं पा रही हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू फॉर्मुलेट द लॉ as per the speed with which the AI is basically moving forward. And now everyone is confused ki how the next 10 or 15 or 20 years will be. And in all that, yes, privacy is very very important. But again, एक हमें दो चीज़ों में से एक चीज़ को एकदम क्लियर करना पड़ेगा। इवन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइवेसीज आर देयर। एक मेरा बहुत ही पर्सनलाइज डेटा, एक डेटा जो मैं कर तो रहा हूँ जिसमें मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही। मीन्स यस, द इफ आई से फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लोकेशन को ऑन कर दिया, तो मशीन ये रीड करेगी कि कोई व्यक्ति ए से बी जगह पर जा रहा है, बीच में रुका, इतनी देर के लिए रुका, कौन सी शॉप पर रुका, वो क्या देखा, बट वो ये रिवील नहीं करेगी कि कौन है वो व्यक्ति।
अंडरस्टैंड। तो प्राइवेसी को हमको, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम एकदम अपनी लाइफ को प्राइवेट रख लें और कोई इसको ना जान पाए और एआई सिस्टम भी साथ साथ डेवलप होता रहे। दैट इज़ अ नियर इम्पॉसिबल टास्क। दैट्स वाई यू सी बहुत सारे ऐप्स तो ऐसे हैं कि अगर आप उनको बेसिक परमिशन नहीं दोगे तो वो काम ही नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं, अगर आप उनको बेसिक परमिशन नहीं दोगे अपनी लोकेशन की या अपने स्पीकर की या कॉन्टैक्ट्स की, तो दे स्टॉप वर्किंग, वो काम ही नहीं करेंगे। ओके। तो ये बड़ा ही कॉन्टेंशियस इशू है कि किस तरीके से इसको निकाला जाए। बट या ये बात भी सही है कि हम पूरी अपनी प्राइवेसी को नहीं दे सकते, लेकिन हम अपनी पूरी प्राइवेसी को छुपा के भी नहीं रख सकते, क्योंकि फिर वो टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी। और पूरी प्राइवेसी को दे दिया तो फिर दे बिकम सो पावरफुल दैट दे आर द न्यू, what we called it, the new Hitler and the new authoritarians of this modern era. So ये बड़ा ट्रिकी सी चीज़ है, देखते हैं आगे कैसा कैसा चलता है। Thank you so much, sir, for giving that example. That includes working on an algorithm, right? And that is where ethical considerations should be very important and should be kept in mind. एक चीज़ इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो लगभग मैं अपनी हर साइकोलॉजी की क्लास में बार बार जो जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ मैं बोलता हूँ, हमारे साथ भी हमारी साइकोलॉजी की फील्ड में जो सबसे बड़ा बिगेस्ट ड्रॉबैक है वो यही है कि whatever we are studying, the different researches, experiments, the different theories, all those theories are coming from the US and Europe, where they have experimented on some 15 or 500 or 1000 or 5000 people, and they have made certain theory, and now they have generalized it on the whole humanity. And that is the biggest problem. Why? Because our society is different, their society is different, and human is very much the result of their upbringing and the society. The nurture plays a very very important role in one's life, understand. And somewhere, because their nurture part is very different, their environment is very different, context is very different, conditionings are very different, so they have a certain kind of mindset. Now they have given certain theories out of it। अब अगर उन्हीं थ्योरी को हम इंडियंस पे अपनाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर लगाते हैं, एंड वी से दिस इज़ द राइट, दिस ये हम साइकोलॉजी के साथ और नॉट जस्ट अ साइकोलॉजी, पूरी सोशल साइंस के साथ जितने भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम सबसे ज़्यादा बड़ा जो गलत कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली व्हाट एजुकेशन सिस्टम इज। फ्रॉइड, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्रॉइड। फ्रॉइड ने जिस कॉन्टेक्स्ट में और जिस ज़माने में वो थ्योरी डेवलप करी साइको एनालिसिस की, दैट वाज, इंडियन सोसाइटी इज नॉट दैट। The Freud has given, for example, the Oedipus complex, Electra complex, the psychosexual stages. No, it is not absolutely same. And now आप यहाँ पर psychoanalysis में आपने ट्रेनिंग ले ली, आप psychoanalyst बन गए। अब आप psychoanalyst, किसी की कोई आपके पास पेशेंट आया, वो पूरा इंडियन है, अच्छा खासा इंडियन, एकदम देशी आदमी, और उसके ऊपर आप psychoanalysis लगा रहे हो, वो थ्योरी जो कि कहीं और से निकली। मैं ऐसा नहीं कह रहा, इसका मतलब कि साइको एनालिसिस कंप्लीटली गलत है या कोई भी थ्योरी एक्सप्रेस नो, दे हैव गिवन अस वेरी गुड थिंग्स, एंड सम थिंग्स आर वेरी जनरल, कैन बी जनरलाइज्ड, दैट इज राइट ऑल्सो। बट एकदम फेस वैल्यू पे जो हमने 100% वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, और उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई फील दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस इज समथिंग लाइक द सेम वेयर, जैसा उस चाइनीज़ लड़की ने पूछा कि अच्छे इंटरव्यू में अपियर होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो एक सफ़ेद चेहरा, गोरा दिखता हुआ, दिस इज़ वॉट यू नीड, विच हैज़ एन अमेरिकन और अ यूरोपियन काइंड ऑफ एथनिसिटी। और वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। एक अच्छी थ्योरी कौन सी है, एक अच्छी रिसर्च कौन सी है, एक अच्छी थेरेपी कौन सी है, वो जो वहाँ पर डेवलप हुई है किसी बहुत अच्छे जर्नल में छपी है, और दिस इज़ व्हाट इट इज़।
तो ये एक बड़ा साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में गड़बड़ वाली चीज़ मुझे लगती So, sir, like you mentioned, therapy and which involves mental health, right? So, है। in the realms of mental health, being a student myself, I understand कि आज के टाइम पे there is a lot of awareness about mental health, पर seeking help is not as accessible for everyone as of now. But हर किसी के पास इस टाइम पे इंटरनेट कनेक्शन इवन इन द रिमोट एरियाज अभी पॉसिबल है. ये सारे चैलेंजेस जो मेजरली स्टूडेंट्स, अगर हम उनके बारे में बात करें, तो मे बी वो आते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और मे बी टाइम कंस्ट्रेंट्स, या फिर मेजरली ड्यू टू lack of psycho education, right? So I wanted to know if you could share an example of AI powered tools जो हमारी mental health को support कर सके या हमारी well-being के लिए हमको help कर सके. So what would that be? And how can AI be leveraged to address the growing mental health challenges in today's society in general? ये आपने बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा एंड आल्सो शेयर विद यू one of the current research which I am doing. Okay, the one part of the study I have already conducted and everything was final and I have sent it to certain journal also, and the second part of that follow-up study is also been going on. So let's start with this, the role of an AI in mental health. Okay, so see, टेक्नोलॉजी के साथ एक चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट, स्केलेबिलिटी. क्या बोलते हैं हम उसको, बिजनेस की भाषा में बोलते हैं स्केलेबिलिटी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फिज़िकली किसी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मेरी लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस ये हैं कि उस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे, बहुत बड़ा हॉल है, मैंने बड़े कैमरे लगाए हुए हैं, स्पीकर है, तो 200-500 बच्चे हो जाएंगे, उससे ज़्यादा मैं एक हॉल में नहीं पढ़ा सकता हूँ. मैं एक क्लास ले सकता हूँ दिन में, 2 क्लास ले सकता हूँ, 5 क्लास ले सकता हूँ. दैट इज़ बेसिकली फॉर एग्जाम्पल से टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, दैट आई हैव रिकॉर्डेड वन ऑफ माई वीडियो फॉर एग्जाम्पल एंड पोस्टेड ऑन द यूट्यूब, सो इट कैन गार्नर द 100 मिलियन व्यूज. जहाँ मैं एक घंटे में एक क्लास में 1000 बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चों को पढ़ा सकता था, टेक्नोलॉजी से वो लेक्चर 1 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता है. दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड इन अ बिजनेस स्केलेबिलिटी. अंडरस्टैंड. मेंटल हेल्थ के साथ सबसे बड़ा इशू ये है स्केलेबिलिटी. व्हाट डज इट मीन बाय दैट? हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में भी मेंटल हेल्थ टूल धीरे धीरे बढ़ रही है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और दूसरी तरीके के प्रॉब्लम्स हैं. और हमारे पास द ट्रेन्ड पीपल आर वेरी लिमिटेड, साइकियाट्रिस्ट आर वेरी लिमिटेड, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर वेरी वेरी लिमिटेड. वी ऑल नो आरसीआई के हर कॉलेज में 10 या 11 सीट होती हैं जहाँ पर आरसीआई अप्रूव्ड एंट्रेंस चलती है. जस्ट दिस इज, so we have a very big dearth of the trained people. Now demand is very high and supply is very very restricted. There's a big gap. So how the AI can come in between? Basically, there are the prevalent business model in the mental health is one to one interaction. I have a certain issue, I have a number of a counselor. I will call him. I will take an appointment. Go there. That person, counselor or a therapist, sit with me for 40 minutes, 50 minutes, and he will charge me. This is what one-to-one business model is there. एक दिन में वो थेरेपिस्ट कितने लोगों को कर सकता है, कितने सेशन ले सकता है, 4 सेशन ले लेगा, 5 सेशन ले लेगा. दैट्स व्हाट इट इज. ओके, फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट मॉडल है ये. उसके बाद आजकल जो दूसरा मॉडल बहुत बड़ा चल रहा है, वो चल रहा है कि यू हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट वेयर यू हैव प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव द 100 काउंसलर्स आर रजिस्टर्ड एंड देन द पीपल विल कम एंड दे विल सर्च कि मैं कौन से काउंसलर को अपॉइंट करूं और उससे मैं वो लूँ. इट्स अ काइंड ऑफ, और इन सम केसेस देयर माइट बी द ग्रुप काउंसलिंग एंड ऑल दैट. बेसिकली थोड़ी सी स्केलेबिलिटी बढ़ गई. और हो सकता है कि आपने कुछ रिकॉर्डेड कुछ ऐसे सेशंस क्रिएट करे कि फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यू हैव क्रिएटेड सर्टेन
kind of, and then you have released it on certain platform and all that, थोड़ी सी स्केलेबिलिटी बढ़ा दी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाट, जो आजकल बहुत प्रेवलेंट है, बहुत सारे जो एप्स हैं, मेंटल हेल्थ के एप्स हैं, इफ़ यू गो, शायद मैंने एक कौन सा किया था, इन्फिनिटी या ऐसे, आई एम नॉट श्योर, जस्ट एक मिनट होल्ड करना, जस्ट गिव मी द 2 minutes, टू Yes, मिनट्स sure, sir. So while sir is taking his time, we can take questions. You can either write in the chat box so that we can address those questions towards the very end. हाँ जी, shall we resume? Yes, sir. Okay, so now the third business model I was talking about, and you see there are various apps are there. So you just open the app, so it will ask certain personalized questions for you. This is the thing, this is the thing, this is the thing, and it will, on the basis of that, automatically, that is a chatbot is doing all these things where even you don't know who is there. You will see that as if the other real person is there, and it will ask certain questions and you will answer it. And this is your personality type. If you have a certain anxiety issues, that will tell. If you have a certain kind of stress, it will tell. Different kind of the basic preliminary things वो chatbot ही आपकी पूरी कर देगा। ओके, और इसके अलावा बेसिक जो प्रिलिमिनरी काउंसलिंग है, जो कि शायद, क्योंकि देखो, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ नहीं होती हैं। बहुत लोगों के जीवन में समस्या है कि उनके पास कोई बात करने को नहीं है। दे हैव अ सर्टेन इश्यूज़ जो उसको बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कि कोई उनको कोई दोस्त मिल जाए, कोई उनको कुछ मिल जाए, उससे कुछ कह दें, शेयर कर दें, तो उनका स्ट्रेस कम हो जाए। बहुत सारे लोग काउंसलर के पास भी इसीलिए जाते हैं। लेकिन इसीलिए समस्याएँ बहुत बड़ी नहीं हैं बहुत लोगों के जीवन में। So when we talk about an AI assisted technology, the AI assisted technology can easily solve this. बहुत सारे लोग जिनकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नहीं है, चैटबॉट्स या जो वॉइस मशीन की वॉइस है कि उसकी रिकॉर्डेड या नॉर्मल, वो उस बेसिक प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। Then if you have the certain, so first, for example, say, look at this model. First is बिकॉज देर इज़ अ बिग, देखो ऐसा समझो कि डिमांड में और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, बिकॉज डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप है, तो इकोनॉमिक्स का जनरल नियम है कि जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई बहुत कम होगी, वहाँ पर चार्ज भी उतना ही बढ़ जाएगा। टमाटर अभी थोड़े दिनों पहले महंगे इसलिए क्यों हो गए थे, क्योंकि टमाटर टमाटरों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, सप्लाई बहुत कम हो गई थी, इसलिए 200 रुपये किलो टमाटर पहुँच गए। दैट्स व्हाट इज देयर एक्चुअली इन अ मेंटल हेल्थ। द प्रोफेशनल्स आर वेरी फ्यू एंड द पीपल हु वांट टू सीक मेंटल हेल्थ आर वेरी मच। अंडरस्टैंड? तो दूसरी चीज़ हो गई कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो नॉर्मल लोगों की रीच में नहीं होती है। तो तीसरी चीज़, जिन लोगों के पास पैसा है वही उस चीज़ को रीच कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये होता है कि इवन मेरे पास पैसा है, चाहे मेरी प्रॉब्लम छोटी है, लेकिन मेरे पास पैसा है तो मैं मेंटल हेल्थ काउंसलर की सर्विस ले सकता हूँ। और एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो भी वो वहाँ की सर्विस नहीं ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे वापस थर्ड मॉडल पे आते हैं। तो यू विल सी, फॉर एग्जांपल, 1000 लोग उस ऐप को खोलते हैं, अपना प्रिलिमिनरी वो करते हैं, बेसिक उनकी कुछ कुछ इश्यूज़ हैं, वो सामने वो ऐप ही ला के बता देता है, चैटबॉट की ये इश्यूज़ हैं।
तो यू विल सी एक्चुअली इन 1000 लोगों में से 200-300 लोग तो ऐसे हैं, 400 लोग जिनको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली स्टेज पर ही वो ठीक हो जाएंगे। मशीन ही ठीक कर देगी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के। के जो लोग होंगे वो ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत कम इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन, थोड़ा सा मशीन इंटरवेंशन। दूसरा, और तीसरे जो लोग होंगे जो थोड़े से सीवियर होंगे, दे नीड द मोर पर्सनलाइज्ड केयर। एंड एआई अकॉर्डिंग डेटा के साथ और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड काउंसलर जो है, थेरेपिस्ट, उसको भी सजेस्ट करेगी पूरा टाइप। तो काउंसलर और ज़्यादा पर्सनलाइज चीज़ें उनको वो कर सकता है। बिकॉज बहुत बार ये होता है ना कि व्यक्ति जो है, जो क्लाइंट है, वो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद भी नहीं बताता डायरेक्टली थेरेपिस्ट को। सो इन दैट ऑल्सो एआई विल हेल्प द थेरेपिस्ट टू गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ द क्लाइंट। सो इन दैट वे यू विल सी कि एक तो स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बहुत कम आ जाएगी मेंटल हेल्थ की, जहाँ पर यहाँ पर एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा फीस है। यू विल सी इन अ स्मॉल अमाउंट बेसिकली यू विल get the basically the knowledge. This is how the basically the AI method can be used of. The point number one. Second, I was telling कि मैं आपको एक रिसर्च जो मैं कर रहा था वो मैं बताता हूँ कि ये एआई किस तरीके से यूज में ली जा सकती है इसी उसमें। तो हमने ये किया कि लोगों से उनकी कुछ प्रॉब्लम्स ली कि आपको अपनी लाइफ में कौन कौन से प्रॉब्लम, बड़े इश्यूज लगते हैं, वो हमें ज़रा बताओ करंटली अभी जो आपको परेशान करते हैं। तो किसी लोगों ने, हमने उनको राइट अप में लिखा। तो कुछ लोगों ने लिखा कि मैं अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ, नहीं जानता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। किसी ने लिखा कि मैं दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करता हूँ और दूसरे लोग जो हैं मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। एंड एक्स वाई जेड, इस तरीके से ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जो उनको प्रेजेंटली परेशान कर रही है। सो वी हैव आइडेंटिफाइड 10 सच interesting problems. Then what we did, we gave those problems to the psychology people who were studying the psychology and who were about to become the, they said कि भाई हम अगले 2 साल में जो है वो काउंसलर बन जाएंगे फॉर एग्जाम्पल से, तो थेरेपिस्ट, हम थेरेपी देंगे जो भी करेंगे। तो दे वर इन टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फॉर लास्ट 3-4 years, 2-3 years। दे हैव रिटन डाउन द आंसर्स कि अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट आप अपने आप को काउंसलर या थेरेपिस्ट समझो और कोई व्यक्ति आपके साथ इस प्रॉब्लम के साथ आया, तो आप उसको क्या कहोगे, क्या इलाज बताओगे फॉर एग्जाम्पल। तो उन्होंने अपने अपने जो भी आंसर्स थे वो लिख दिए, रिटन फॉर्म में हमारे पास आ गए। ठीक है। अब हमने क्या करा कि जो सेम प्रॉब्लम्स थी उनको डाला हमने चैट जीपीटी में और वहाँ से आंसर लिए। दिस इज द थिंग। उसके बाद हमने एक गूगल फॉर्म क्रिएट करा जिसमें दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द ह्यूमन रिस्पॉन्स, दिस इज एन एआई रिस्पॉन्स। और हमने एआई रिस्पॉन्स को मास्क करा। हमने लोगों से वो भरवाया कि आप इन दोनों ह्यूमन रिस्पॉन्स और एआई रिस्पॉन्स को रेटिंग दो, प्रोफेशनलिज्म पर, ऑथेंटिसिटी पर और प्रैक्टिकलिटी पर, लिकर्ट स्केल पर 1 to 5, इन तीनों में क्या क्या उनका आंसर, कितनी आप रेटिंग देते हो। हमने लोगों को ये नहीं बताया कि ये जो दूसरा रिस्पॉन्स है ये एआई रिस्पॉन्स है। वी हैव मास्क्ड इट एंड वी टोल्ड दिस इज ऑल्सो इन ह्यूमन रिस्पॉन्स, बट दिस इज फ्रॉम अ नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड ओनली, फॉर एग्जाम्पल, or from the different people. So these are the two human response. You need to judge that. Although one was AI response, and you will be surprised that the mean score of AI chat GPT response in terms of professionalism, practicality, and this authenticity was a bit higher than the human response. What does it mean by this? हमारे पास अगर हमारी लाइफ में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूरी थोड़ी हम काउंसलर के पास जाते हैं। हम चाहते हैं मेरा कोई दोस्त हो, मेरा कोई कज़न हो, मेरे कोई चाचा हो, मेरी कोई सिस्टर हो, उसके साथ मैं अपनी बातों को शेयर करूं, बदले में वो मुझे कुछ दो अच्छी बातें बता देगी, मैं नॉर्मल महसूस करूंगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली, दिस इज़ व्हाट वी डू इन अ डेली रूटीन। वी डोंट डायरेक्टली, मेरे लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई मैं काउंसलर के पास जाऊंगा। दिस इज़ नॉट। एंड यू विल सी नाउ डेज दैट पीपल आर एक्चुअली अलोन। People don't have the kind of, the different sort of this, many of the people live alone in the cities, the other people don't have the time. So in that actually the machine can become a very good friend, at least temporarily.
Although there are ethical concerns, ethical reasons are there, but this is just the one possibility. और उससे क्या होगा, स्केलेबिलिटी चीज़ों की जो है वो बढ़ जाएगी. दिस इज व्हाट आई होप कि मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा. Yes, sir. इसी के कॉन्टेक्स्ट में किसी का भी कोई क्वेश्चन आया था, डाउट एक बार इसी कॉन्टेक्स्ट में था, तो आप देखो ना क्या किसी ने पूछा. Yes, sir. We can address the question. Um, so the question was from Okay, Ishu हाँ, Jain. yes, yes, yes. Sir, one doubt, the rating was done by the same people from whom the problems were collected. Yes, in some, although the size was the big, but those people were also included. And because we shuffled it, किसी को क्योंकि प्रॉब्लम्स हमने एक्चुअली में 50 इकट्ठी करी थी, हमने उनको शफल कर दिया और केवल इनमें से 10 लिए, 50 नहीं. हाँ जी. Thank you so much, sir, for taking us through this deep dive into your research that you're conducting as of now. So, we can take any more questions as of now. If anyone of our listeners has any more questions, you can either raise your hands or write it in the chat box. अच्छा, इसका एक सेकंड पार्ट क्या, सेकंड पार्ट ये है कि अब ये जो चेक बोर्ड्स हैं ये बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं. एंड सो व्हेन वी वर डूइंग दिस स्टडी वी हैव कम अक्रॉस वन लिटरेचर रिव्यू एंड दैट देयर वाज अ चेक बोर्ड जिसका नाम था कोको. अब क्या था कि कोको ने, इट वाज एन ऐप एंड पीपल हैव रजिस्टर्ड ऑन दैट ऐप फॉर द काउंसलिंग एंड थेरेपी पर्पसेस. एंड सिंस कोको वाज chatbot machine, Coco was not the human. People were thinking that the real human is counseling them and they were also getting very much satisfaction और सब कुछ सही हो रहा था. Suddenly after a certain days, कोको हैज़ रिवील्ड, जो कोको के जो प्रोग्रामर्स थे ऐप के ओनर्स, उन्होंने रिवील करा कि नहीं, ये सामने कोई आदमी नहीं बैठा है, ये मशीन है, वो आपको काउंसलिंग दे रही है. सडनली द परसेप्शन ऑफ द पीपल वर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. आई मीन दे वर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड कि मशीन, मतलब पहले जो उनको उनकी काउंसलिंग से सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, वो सेटिस्फेक्शन अचानक से बहुत कम हो गया द मोमेंट दे केम टू नो दैट इट इज अ मशीन. This is also like, because we have the humans, we want the human touch, even if that touch is not real, even if that is fake. But if we think that that is the human, that is fine. The moment we know that it is a machine, then everything goes gadbad. हाँ जी. Yes, sir. We have a question here. You can unmute yourself and kindly speak. Thank you, Shruti. Sir, I just wanted to ask, since you're an assistant professor yourself, I think it will take us some more years for us to change the national education policy in such a way that the education system from the school itself would inculcate courses that is more cognitively helpful and developmental for the students. But as of now, with the help of AI, we have so much. Facilities that people can just, like, kids can just use Google Lens or AIs like Chat GPT, and they can find solutions to their problems. A lot of people are writing their college essays and getting into Harvard and Yale using Chat GPT. And since you're an assistant professor yourself, I'm sure a lot of kids from your class would have also written their essays or assignments using Chat GPT. How do you think AI is sort of contributing or reigning a negative impact in kids from a very early age, in not really helping them develop their thinking capacity, their cognitive capacity? Because at the end of the day, it's not really about how good of an essay do you write, how good of a score do you get, but it's more about how you develop your thinking, from reading books and everything. How do you think AI is reigning negatively on that? And as future, as a present and future educationers, how could we stop our students from doing that? Definitely, it's a very good question. And the thing you will see, interestingly, nowadays, because of this, what we called it, hmm, कौन सी लाइफस्टाइल होती है वो, वेयर वी ओनली सेट, बिकॉज ऑफ द वाइट कॉलर जॉब्स फॉर एग्जांपल से, वी, unlike if we go back 50 or 100 years back, we say we have to do a lot of toil, lot of hard work in the farm or even in the society, because मैनुअली हाथ सारी चीज़ें होती थी, खाना पकाने से लेके कपड़े धोने से लेके सारी चीज़ें
आपको मेहनत से करनी पड़ती थी, सो दैट ऑल्सो हैज़ अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन अवर फिजिकलिटी। अभी क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड द टेक्नोलॉजी, द पीपल जस्ट सेट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इन द ऑफिस, ओके, एंड दे गो, दे हैव अ डिनर देन दे स्लीप। मॉर्निंग में भी यही रूटीन चलता है, यानी कि फिजिकल एफर्ट बहुत कम हो गया है। यू विल सी, इवन यू सी इन आवर यूनिवर्सिटी, द स्टूडेंट्स टेक द लिफ्ट इवन फ्रॉम ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर। उनको 15 सीढ़ियाँ चढ़नी है, उसमें भी वो लिफ्ट से चढ़ते हैं। दैट इज़ व्हाट बेसिकली द लाइफ स्टाइल हैज़ बिकम। उससे प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई कि फिजिकली अगर आप काम नहीं करोगे तो फिजिकली फिर धीरे धीरे गड़बड़ होने लगेगी। वेरियस कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, दिस डिजीज दैट डिजीज, ये कोलेस्ट्रॉल, वो सारा आने लगेगा। दैट इज अभी, क्योंकि माइंड भी हमारा मेहनत के लिए ही बना है। अब द थिंग इज कि वेरी स्टार्टिंग अगर कोई फोर्थ स्टैंडर्ड और फाइव स्टैंडर्ड में बच्चा है और उसको चैट जीपीटी चलाना आ गया और सारी चीज़ें वो चैट जीपीटी से कर रहा है, तो एक्चुअली यू नो दिस टेक्नोलॉजी विल बी व्हाट वी से बेन फॉर अस, सबसे बड़ा श्राप, क्योंकि दैट विल मेक अस मेंटली इनकेपेबल। अभी हम धीरे धीरे फिजिकली इनकेपेबल होते जा रहे हैं, बिकॉज हम फिजिकली हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, हमने अपने शरीर को आराम दे दिया है। धीरे धीरे अगर हम सारी चीज़ों को चैट जीपीटी से करने लगेंगे और असिस्टेड करने लगेंगे, तो वी विल सी कि मेंटली ना तो हमारे अंदर है ना, बिकॉज सी व्हेन यू राइट, you don't just write an essay. It involves your critical thinking, it involves your creativity, it involves your analytical thinking, it involves your concentration, it involves your attention. Various cognitive components are involved into that, and all these things develop when you do some cognitive task. And when the same cognitive task is doing by a chat gpt and you are just sitting and doing nothing, what will happen? That capacity won't develop, or धीरे धीरे you will see a certain kind of a mental handicap will start developing in the people, and might be in 100 or 200 years there might be some brain changes also happens, might be. So yes, this is a very drastic situation, and we will have to really have to think about it, because see, technology is for our health, understand? So we can, it is an assisted technology, it is not for our replacement. And unfortunately, if we have replaced our efforts with the technology, then it will be the disaster, I think so. Or we have to find out certain other avenues of our cognition where the technology is still incapable and we have to move into that. But I don't think so वो अभी है। अभी तो यही हो रहा है कि कॉग्निटिव हैंडीकैप के चांसेस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे अगर हम पूरी टेक्नोलॉजी नहीं खाली बच्चे जैसे लेने लगे तो। दैट इज व्हाट इट इज, आई थिंक। Thank you, sir. Like again, like following up on that question, what do you think we can adopt as measures for immediate, um, intervention that we can give to the students, or we could ensure in our classes that the students that we are teaching do not entirely seek help of the AI to, because it's very easy for us. I mean, like, I remember the last time we were giving our master's exam, we did not have time to skim through books at the last day. So it was easy for us to simply go to Chat GPT and, like, take out 30 pages of notes that would be more beneficial than reading a 300-page book. But how do you ensure, like, where do you draw the line as an educator yourself, and what would your advice be as, to the future educators in this field? Well, I think in this direction, first of all, we have to see how and in what ways the students are using this technology. So, for example, when you talk about an exam, this is the most common exams or homework assignment, इन्हीं चीज़ों में बच्चे सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि वी हैव टू completely overhaul our assessment and examination pattern and system, that is also very faulty. अगर हम इसी तरीके के एग्जामिनेशन पैटर्न पे चलते रहे वेयर यू मेमोराइज सर्टेन थिंग एंड हाउ यू आर गुड एट राइटिंग ऑल दीज थिंग्स एंड सर्टेन एनालिटिकल राइटिंग स्किल्स, देन चैट जीपीटी का रोल बढ़ता ही जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड some very innovative examination or assessment technique
which will be more focused on the real world or an active participation rather than passively writing something or some other thing. So I think we have to think very fast and very creatively in this direction. Otherwise, will technology this beneficial aspect of technology will be very detrimental for our growth. एंड एंड एक और क्वेश्चन जो आपने उससे पहले पूछा था इंडिया, ये जो मैं बोल रहा था कि साइकोलॉजी इज़ वेरी मच, थोड़ा थोड़ा हम वो वेस्टर्न सारा एस्पेक्ट पढ़ते हैं और उसका एक वो, तो अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें अच्छी होने लगी हैं। अब मुझे नहीं लगता उसमें कितना टाइम इसमें लगेगा, but now the Ministry of Education has a special division which they are saying that Indian Knowledge System (IKS) division they have created, and in that IKS the different things related with the Indianness कि हमारे वेद पुराण उपनिषद एस्ट्रोलॉजी और हमारी मैथमेटिक्स वैदिक मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट थिंग वाज देयर, मतलब तो किस तरीके से हम वापस एक अपनी थोड़ा सा एक इंडिजिनाइजेशन का एलिमेंट हमारे अंदर वापस से लाएं। So now IIT Kharagpur, IIT Mandi, IIT Madras, and with different institutions, they have started this center of IKS, and they are thinking about how to bring this element of this Indianness in our education system. So let's see इसमें कितना क्या करेंगे। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. We have another doubt. Um, this is from Harshit Singh. The prevalent assessment techniques in our education system are mainly focused on gauging the memory capacity. And if it is a little better, then creative and critical thinking are also added. So, if AI is going to give solutions to the same attributes, which are memory, critical thinking, and creativity, what is the way forward for the policymakers so that they are able to make the assessments more relevant in the future? And what are the advanced nations that are doing this in regard? Well, I'm not very much aware about the, because I guess nowadays, so when we talk about an AI, जैसे बहुत सारे there are flag check softwares are there. For example, Turnitin is there. So you have write an essay, and now when you check in Turnitin, so Turnitin will say two things. One is the plagiarized plagiarized content of your essay, and the other one is an AI assisted tool which you have taken help. So Turnitin will clearly tell that, for example, 7% is your material is plagiarized, and for example, 41% or 50% your AI assisted. So in that, I think as the technology is improving in this direction, also the flat check technology is also improving in the same direction somewhere. It's not, they are parallelly going on. Although flag is behind the AI assistance behind, but they are trying to bridge the gap. So I think that yes, if and nowadays even you see if you publish, if you send your research paper in some reputed journals of Elsevier and all that, so they ask you that they treat AI as a co-author in certain journals. That if you have taken the use of AI technology in the creation of your paper, writing of your paper, so they won't say you that it is plagiarized. They will say it. They will consider it as an AI co-authorship. Understand? So, but I think that as we talk about the writing and all that thing, that AI, this software, different software might able to analyze, because you see there are certain pattern, even an AI pattern is there, the way the AI write. Although this pattern also can be changed by giving the repeated instructions and all that. So still, but on a wider level, the still the academicians think that the AI can assist you. It cannot replace you. So somewhere.
This is, we have to develop some more blackjack tools and all that thing. And as far as the global practices are concerned, I think they have started considering the AI content as well, but they have the different uh, क्या बोलते हैं आप, अलग अलग ratios and all that they have approved and all that. So different practices, I guess. Thank you so much, sir. So, lastly, what are the key takeaways and messages you would like our listeners to remember regarding the intersection of AI and education and mental health in general? Key takeaways. Key takeaways. So number one is that, see, the technology is a instrument. Okay. Now, how you use that technology matters, decides on you. So you have a knife in your hand. You can cut the vegetables and you can cut yourself. Both the things are possible. Okay. So I think that first of all, the technology itself is not wrong. Okay. We have to teach the kids, and now you will see the various YouTube channels and various videos on various platforms related to how to use the chat GPT for the specific purpose. So as a, as if I tell to you, I am telling you, I'm not talking about the school kids, I'm talking about you this time, that AI is the fact, and we have to accept this fact. This is the second info. It is the fact. We have to accept this fact. Now, the third thing is we have to learn how to use this tool to make our life more productive, effective, and efficient. That basically we need to learn, and that I think if we are intelligent ourselves, we can do it. And machine cannot replace humans. Still, this is the fact. Machine can replace the workforce in certain things, but humanness still cannot be replaced. Okay, so the key first is that learn how to assist this technology, how to not assist, how to take the assistance of this technology for your personal and professional life, and that you can do, and actually that make your life and your work much easier, and it will help you to put your attention and focus in a right direction, and it will save much of your cognitive the capacity and the energy. This is the first thing. Second thing is about second thing is about uh, develop your own intelligence. Artificial has been developing on and on and on, but don't stop or halt your own intelligence at one place. So always seek learning and be open towards whatever is happening. And that is the right thing, that technology is there for our help, and we can and we should make use of it. है ना? And finally, when we talk about mental health, no technology, nothing can actually help you intrinsically. As we are talking about ourselves, we are not talking about the how AI can take help as a mass level. We are not talking about policy. We are not talking about the mass people or the society. Just if you are 24 people are there in front of me and all are very fine. So I say that mental health is a very intrinsic phenomenon. So love yourself. That is the only one and important thing I want to say, that when we talk about mental health, charity begins at home. So before you counsel any person around you, make sure that you are absolutely healthy and in your highs. That is.
then move on. And how you will do that? You will do that by loving yourself. So if you love yourself, chat, GPT and AI and all that thing will doesn't matter at all. Understand? Because chat GPT cannot love you. AI cannot love you. That is for sure. They can show that they are loving you, but they cannot intrinsically love you. Understand? This is what it is. Like you rightly said, sir, that AI is a fact, but it cannot completely replace the humanness, completely remake the humans, right? Every humans have a need of that touch, of that feeling of having somebody around. So that is very important, and AI can never completely replace that. So with that, I would like to extend a very sincere gratitude to you, sir, for sharing your expertise and your knowledge with us and coming on our platform. So, and actually answering every question with so much detail. So, thank you so much for joining us today. And it was a very insightful session. And for our audiences, thank you for being such a great audience. And I hope the conversation with the Gagan sir was extremely engaging and insightful for you as well. And please stay tuned for our upcoming episodes where we'll continue to explore the fascinating realms of psychology, featuring more expert guests and engaging topics. If you have any questions, thoughts, ideas you would like to share, you can mail it to us on bhupsyconnect@gmail.com. And you can also follow us on our LinkedIn page to stay updated with all the upcoming events. To conclude, I would just like to say that remember that human mind is a journey with no end, and we are thrilled to have you by our side to navigate the incredible terrain together. Thank you so much for being such a great audience, and thank you so much, sir, for joining. Thank you, all of you, for listening so patiently and with so eagerness, and also asking the very interesting questions, so that when you ask something and something new automatically comes in the mind that yes, this can be the thing. So thank you very much for inviting me and giving me this platform to express my views and share my views with all of you. And hopefully we will be in touch in the upcoming future as well. And all the best and मजे कीजिए, enjoy करिए. This is what. Thank you so much, sir. Okay, thank you, thank you. Thank you, everybody, for joining.